So now discuss the CV and needed correction. Dear viewers, we are doing a sample CV correction and we will try to make an effective CV as per the requirement of the employer. A candidate has to apply for a job and the application and CV should be as per the requirement of the employer. At the same time, the CV should help the candidate in selection and this should give an opportunity of interview. This should also help the candidate in relevant questions. So we have taken a sample CV and we would be doing some corrections in this. So viewers can have a learning session. Mohammad Sharik, thank you very much for helping me in developing this sample CV and coordinating me for correction of a CV. Thank you very much for your cooperation. So now we would this would look like an original CV and all the questions would be original questions and Sharik would be helping me in correcting this CV. So Sharik, consider that this is your CV and feel like everything is yours and you have to give answers. I would be asking the answers and I would be suggesting changes and you have to feel like everything is yours and situation should look like quite real so that all viewers can understand that the same type of situation take place and same type of problems they have also to face. Thank you very much for cooperation. Now, please pay attention upon the heading. Heading of the CV should be like this. Be careful about font size also. आप इसको करिकुलम विटे भी लिख सकते हैं, CV भी लिख सकते हैं और नाम अपना लिख करके शारिक CV और रमेश CV इस तरह से अगर आपने कर दिया तो भी ठीक है, चलेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। फ़ॉन्ट का आप ध्यान रखें, अगर आपने CV के जो अंदर आप टेक्स्ट लिखेंगे उसका फ़ॉन्ट यहाँ पे 10 है फ़ॉन्ट साइज, तो फ़ॉन्ट साइज 10 ही बेहतर है, 12 थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसकी ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। हेडिंग जो CV के अंदर आपने हम लोग भी सामने देख रहे हैं वो है 14। उसी तरीके से CV की जो मेन हेडिंग है करिकुलम वेटे उसका फ़ॉन्ट साइज है 16 और बोल्ड। अब हेडिंग के बाद CV की हेडिंग के बाद अब आप नेक्स्ट इस पे आ जाइए, स्टेप पे आ जाइए जो इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन इंक्लूड्स नेम ऑफ द कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट etc of the candidate and a formal photo of the candidate. So this is sample name of candidate, this is contact detail, these are contact details. This is a photo. Sharik, you can think if you have any question from this photo, like a question, genuine question is, क्या ये photo सही है? So regarding photo, most important suggestion is photo should be formal. ठीक है, formal तो लगभग लग रही है, लेकिन अगर आपने formal dress में यानी आप टाई और कोट भी है आपके पास, आप कॉर्पोरेट में अप्लाई कर रहे हैं तो टाई और कोट भी हो तो बेहतर है, गला खुला हुआ ना हो तो बेहतर है और फोटो रीसेंट होनी चाहिए। अगर ये कैंडिडेट की रीसेंट फोटो है तो ठीक है, अगर ये रीसेंट नहीं है तो फिर ठीक नहीं है। मूव अहेड। अब इस सेक्शन पे आ जाइए, इंट्रोडक्शन। तो व्हाट शुड बी इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन जब हम लोग CV की ट्रेनिंग दे रहे थे लास्टली एसेंशियल एम्प्लॉयबिलिटी के ट्रेनिंग के सेकंड सेशन में, CV में हम लोगों ने बताया कि इंट्रोडक्शन शुड बी योर फुल इंट्रोडक्शन, फुल प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर। यानी कि जिस जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। एक और पर्सपेक्टिव जिसका आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो पर्सपेक्टिव क्या है? पर्सपेक्टिव ये है कि आपकी पूरी CV उस जॉब के मुताबिक होना चाहिए। यानी ये इंट्रोडक्शन इज
इंट्रोडक्शन ऑफ योर फुल सीवी, आपके पूरे फुल सीवी का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन का जिस्ट होना चाहिए ये सेक्शन, इंट्रोडक्शन का सेक्शन। इसमें यहाँ पे हम लोगों यहाँ पे सैंपल सीवी में लिखा है डायनामिक एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल विद 1 year ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपर्टाइज in PL SQL development and wish to see myself a successful data scientist। तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन इस इंट्रोडक्शन के बाद जो करियर ऑब्जेक्टिव आपने लिखा है, दोबारा हेडिंग यहाँ पे है, तो इस करियर ऑब्जेक्टिव जो आपने अगली हेडिंग दी है, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ देखें आप, wish to see myself a successful data scientist, तो उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आप जब अगर दे रहे हैं अपने करियर ऑब्जेक्टिव को, तो फिर अगला करियर ऑब्जेक्टिव की जरूरत नहीं थी। क्योंकि आपने अगला स्टेप करियर ऑब्जेक्टिव लिखा है, इस वजह से इंट्रोडक्शन में एक स्टेप पहले में करियर ऑब्जेक्टिव लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि करियर ऑब्जेक्टिव के सेक्शन में आप करियर ऑब्जेक्टिव को लिखें। तो यहाँ पर से इसको हम हटा दे रहे हैं, एक्सक्लूड कर दिया हमने, और उसको फिलहाल यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, आगे उसको करेक्ट करेंगे। अब इंट्रोडक्शन पे इंट्रोडक्शन को करेक्ट करें, डायनामिक एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, ठीक है, विद ओवर 1 years नहीं 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, ओवर 1 year, experience, full stop। Expertise in PL SQL development। Sharik, Yes, any sir, I other am listening. any other expertise and relevant skill that you want to mention here, considering this to be your CV? There are several programming languages I know, Most important and most relevant. but that is not relevant to this specific job. So I didn't want to exclude. Okay. Any personality trait that would be relevant for this post? Like creativity is a trait, hard working is a trait, smart working is a trait, team management is a trait, work stress handling is a trait. So relevant Excuse me, sir. yes, Are you listening now? yes, I am listening to you. It was disconnected, so I was there. That we can include one more thing is that there is also the section in PL/SQL that everyone has to include and report his database project. yes. So we can add on the introduction section is to expertise in Oracle Business Intelligence, that is OBI, Oracle Business Intelligence for reporting. PSQL development, PL SQL development, and Oracle Business Oracle. Intelligence. Business Intelligence. OBI. OBI. Oracle Business Intelligence for reporting. Oracle Business Intelligence for reporting. Is there any need to include the softwares that are using to report? I had included in the below section. If you have included in the below sections, it is okay. If this is one of the most prominent skill that is required by the organization and the employer, you can mention here.
Otherwise, this is okay. We can move ahead. Is there any need to capture in this Oracle Business Intelligence in small parenthesis or bracket? You can if you want to. Okay, sir. Okay, tell me what should be written in. Oracle Business Intelligence is the full form of OBI. Actually, OBI is an acronym of Oracle Business Intelligence. Okay. This is okay, I think. Now come to the second point. Do you want to add anything else? No, I think it's sufficient. Move ahead then. Career objective and domain skills, isn't it? To obtain a position in PL/SQL developer, that will allow me to utilize my technical skills, experience, and willingness to learn in making an organization successful. ठीक है, आमतौर पे लोग इस तरीके से लिखते हैं, कैंडिडेट्स इस तरीके से लिखते हैं, लिख सकते हैं। एक फ्रेशर या फिर जो नया प्रोफेशनल है वो इस तरह की चीजों को लिख सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो अगला सेंटेंस जो आपके जो इस इंट्रोडक्शन से हमने कट किया था, वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, wish to see myself, I wish to see myself a successful data scientist, and this should be rather the beginning sentence of this section. Be careful about writing conventions. हेडिंग हम लोगों ने दिया, हेडिंग के बाद टेक्स्ट लिखा, दूसरी हेडिंग है, उसके बाद फिर टेक्स्ट है, उसी के बाद फिर आप देख रहे हैं कि स्पेस देना जरूरी है, टेक्स्ट के बाद स्पेस होना, यानी एक इंफॉर्मेशन है तो वो एक पैराग्राफ और एक सेट ऑफ स्पेस में रहेगा, दूसरी इंफॉर्मेशन जब स्टार्ट हो रही है तो वो दूसरे सेट ऑफ स्पेस में रहेगा। थर्ड इंफॉर्मेशन है वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस में आमतौर पे एप्लीकेंट्स और स्टूडेंट्स इसी तरीके से लिख देते हैं जिस तरीके से अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। So this is actually not a very formal style of writing. Rather, this should be written in a better manner. So I am editing this. This is name of the organization, Orazer Technologies. So write Orazer with capital. This is name of the organization, uppercase. Orazer Technologies. Second word should also be capital. All words, all the starting letter should be in capital letter. Private Limited. This is name of the organization. Name of the organization should be highlighted. This should be bold, isn't it? See, now what would happen? The first component is the name of the organization. Second is your position, isn't it? So PLSQL developer. Can we write software developer, PSQL? Yes, we can. Actually, it's a software development job. Software And we can. Developer. So which software? PLSQL. Now, what is required? The requirement is the period of time. So I am doing like this. May 2022 present. The period of time, isn't it? Third line is your position.
So viewers, pay attention towards each and every word and each and every addition and changes, because these are the usual and most common mistakes. We need to learn writing conventions. Writing convention is what? This is part of effective communication skills. CV writing is what? CV writing is also part of effective communication skill. This is a written form of communication, isn't it? But CV is not only limited to your communication skills only. This is a form of communication. This is a written form of communication. But what this is a reflection of all your professional information also, all relevant professional information. So in order to write an effective CV, you need to be an effective professional also. You need relevant qualifications, you need relevant professional skills, and you need to be aware with all the relevant and required skills, qualifications, experience, exposures, personality traits also, isn't it? So continue to see. Project description. Project description, this can be said role and responsibility. Am I correct? Yes, yes, you're right. Role and responsibilities. Oblique project description. Worked on automation. Worked on automation. What is this? EMAEA. What is it? Actually, it's a term in automation technologies. Okay. The renewable projects. Worked on automation. EMEA. I put the written term. This is one thing. Is it one thing? Should there be comma, or this is the whole sentence is one sentence? Worked on automation, EMEA, renewal Automation projects EMEA for renewal projects. Yes, yes, it's a the whole EMEA renewal projects. projects for McAfee, Red Hat, Sophos, Chernobyl. Okay. If it is there, it would be better if you can define in more elaborate manner. Yes, yes, we can Isn't it? in a subsidiary manner, of course. Isn't it? Do you want to add any other point also? I have mentioned it point wise. So it would be it is a better writing convention for CV. Worked on automation. The terms would be better to write in capital letter. The renewal projects for partner. Do you want to add any other point that are important and relevant? No, actually, it's quite good now. This is as you can see, it was written in a paragraph. Now it is looking quite better than before, and this is better in comparison. It is more professional. Next heading is education and credentials. Your education must start from the latest qualification, isn't it? Latest qualification means if you have, after the completion of your graduation in 2020, it is 2021, and as you might have gone through several professional courses, short-term courses, certificate courses, you should better write those professional courses and certificate courses at the first place.
So if you have any, you can certificate course. If there is any certificate course name, you can mention it. Otherwise, you need not. You should start from the latest qualification. Do we need to mention it? Do you need to mention any certificate course after graduation? Yes, there are, but I think what type of certification? Technical certification I'm talking about. You No, are no. BCA. You are BCA from Mazharul Haq Yes, yes. University. So there must be any other. I think this can be added. Whoever, whatever, it is for all candidates who are applying for jobs. Besides their graduation, besides their professional training courses, if they have time, they should keep on adding to their technical Yes, qualifications. I had, but that that didn't provide me any certificate. That I have attended many programming languages and I learned them very well, but they didn't give me any certification. So no, I think I would suggest if there are if you have attended training programs, so either that should be considered as internships, or you should get certificate of No, attending actually, those after courses. graduation and That would during the pandemic time, so pandemic was there, so that we were not attended any internship, and but you have we didn't apply but for that. but I think you have attended several online training sessions and Yes, yes, programs. yeah, yes, I So have attended. anybody who has attended and who has done anything relevant, if I have you are attended. if you are a Yes, yes. candidate from technology, if you are a candidate from business management, if you are a candidate from any industry, so it would be better if you have added to your educational qualification. So mention only the relevant qualification and certificate courses. If others are there and they are not relevant, it is better not to mention non-relevant qualifications. So if you have, you can add, isn't it? And if you Yes. don't have, it is better to uh, keep the same. So, but for the PL SQL development, it's more important than PL SQL language, and PL SQL language is Hmm. more relevant for this. And Yes. I have attended this training of PL SQL and SQL from Oratech Consulting Hmm. Institution, or that is of Saqib sir. What is was it a certificate course? Uh, he will provide me, inshallah. So we can Yes, that is a certificate course. So name is PL SQL and PSQL. Oracle SQL. The first is Oracle Oracle SQL plus QL PLSQL, plus PLSQL from Oratech Consulting. PL SQL slash uh, after PL there is a SQL SQL from Oratech Consulting. Oradex spelling Not tech, TECH. It's actually Oratech tech consulting. consulting. Mm. Is there any demand or any purpose to note the Bangalore? We can No, that is not mention needed. here. It is okay. The faculty who conducted these sessions is from Bangalore. This is okay. If your interviewer is asking question about this,
कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने अपने सर्टिफिकेट में अपने सीवी में जिन सर्टिफिकेट्स को मेंशन किया है, क्वालिफिकेशन को मेंशन किया है, वो सभी ऑथेंटिक होने चाहिए। सारे कैंडिडेट्स इस बात का ध्यान रखेंगे। और कोई भी सर्टिफिकेट जो आपने किया है, जो आपने नहीं किया है, उसको आप मेंशन नहीं करें, क्योंकि आपका सीवी बिल्कुल ट्रूथफुल होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन उसकी ट्रूथफुलनेस को, ऑथेंटिसिटी को चेक करता है। तो आपने दोनों बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आपने किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड किया है, तो गेट सर्टिफिकेट ऑफ दैट you have actually learned. You should receive certificate of that. Any training program, any workshop, any certificate course. और जिनका आपने नहीं किया है वो मेंशन ना करें। कोई भी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखें। Intermediate, graduation, these are actually you need not mention everything. उसकी requirement नहीं है. However, if you have written, it's okay, but that are not required everywhere unless the organization requires from you. So can we raise the below? Yes, you can. Okay. So it's important to include only the bachelor's degree and the certification only. Yeah, these are quite okay. Okay. Should we also sectionize the two thing, Oracle SQL or SQL, in two section? You can. If these Because are two different separate languages. languages, you can mention separately. It would be better for you. For candidature, it is better. Yes. If these are two programs, you can better write it as two programs. Okay, sir. Is this okay? ADCA. Please check. You have in your education and credentials or educational qualifications. We are editing. It was additional advanced diploma in computer application. So it would be better to write it like this: ADCA from NCA Patna. So what we are doing, we are trying to make each and everything, we are trying to write each and everything, each and every point in a better manner. At the same time, we are trying to write only relevant information, and we are trying to add what are missing. जो relevant information missing है, उसको हम लोग add कर रहे हैं. जो irrelevant इसमें मेंशन हो गया है, उसको हम हटा रहे हैं. और जो प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ नहीं है, हम लोग उसको एडिट करके प्रॉपर तरीके से लिख रहे हैं. तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू फॉलो द फॉर्मेलिटीज ऑफ सीवी राइटिंग. सीवी राइटिंग की जो फॉर्मेलिटीज है, जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, वो हम लोग कर रहे हैं. तो अभी आप देख रहे हैं कि आपकी सीवी, ये सैंपल सीवी जिसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट पैराग्राफ के फॉर्म में लिखी हुई थी, उसको हम लोग चेंज करके एक बेहतर प्रेजेंटेशन में भी लिख रहे हैं. उसके साथ साथ जो अननेसेसरी कंटेंट है उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, और जो नेसेसरी कंटेंट जो लिखा जा सकता है, जो टैलेंट आपके अंदर मौजूद है, जो एम्प्लॉयर के लिए रेलिवेंट है,
आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए रेलिवेंट है, आपने अपने सीवी में लिखा नहीं है, तो हम उसे चुन करके या आपका ध्यान इस बात की तरफ दिला रहे हैं कि आपको उसे अपने सीवी में मेंशन करना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयर को उन स्किल्स की जरूरत है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जिन स्किल्स को आप मेंशन कर रहे हैं वो स्किल्स आप में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास स्किल्स नहीं है, एम्प्लॉयर को जरूरत है, आपके पास है नहीं और आपने लिख दिया। Isn't it? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप सीवी बना रहे हैं तो आपकी सीवी आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगी। तो हेल्प वो क्या कर, आपकी सीवी आपके इंटरव्यू में क्या हेल्प करती है? आपकी सीवी आपके इंटरव्यू के लिए चांस दिलाती है। यू अप्लाइड फॉर द जॉब, आपकी सीवी में रेलेवेंट स्किल्स मेंशन्ड है, एम्प्लॉयर उन रेलेवेंट स्किल्स को देख करके आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकता है, आपको इंटरव्यू का मौका मिलेगा। इंटरव्यू को में कंपनी ने, एम्प्लॉयर ने क्यों कॉल किया है आपको? इसलिए कॉल किया है क्योंकि एम्प्लॉयर चेक करना चाहता है वेदर यू हैव दीज रेलेवेंट स्किल्स और नॉट। आपके पास ये रेलेवेंट स्किल्स हैं कि नहीं है। जिस स्किल की कंपनी को जरूरत है, जिन स्किल्स का जॉब में काम है, वो स्किल्स अगर आपके पास हैं तो कंपनी आपको चेक करेगी और सिलेक्ट कर सकती है। लेकिन जिन स्किल्स की जरूरत है वो आपने अपने सीवी में लिखा तो है, लेकिन वो अगर आपके पास है नहीं, तो सवाल तो वहीं से आएगा जिन स्किल्स को आपने मेंशन किया है और जिन स्किल्स की कंपनी को जरूरत है। सो बी क्वाइट ऑथेंटिक, बी केयरफुल अबाउट व्हाट शुड बी योर स्किल्स, क्या स्किल्स होना चाहिए। बी ऑथेंटिक इन योर स्टेटमेंट्स, जो आप बोलें वो सच हो, जिस चीज की जरूरत है वो आपके पास हो, जो आप बोलें वो सच हो, और वहीं पे सवाल होगा और उसी का आप जवाब अगर देंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगले स्टेप पे आए, आपने यहाँ पे सीवी में मेंशन है आईटी स्किल्स। उसके बाद आप देख रहे हैं कि स्किल्स एंड एबिलिटी, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ, पोजीशंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। तो एक्चुअली एक स्टूडेंट ने, जिसने भी इस तरीके से बनाया या जो स्टूडेंट्स इस तरीके से सीवी बना रहे हैं, तो उन्हें अंदाजा नहीं है कि किस हेडिंग के अंदर किन चीजों को हमें लिखना है और किन चीजों को लिखने के लिए हमें अगली हेडिंग की जरूरत पड़ सकती है। जब आप सीवी बनाएंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब आईटी स्किल की हेडिंग है तो फिर उसके अंदर में आईटी स्किल्स को ही मेंशन करना वो आपके लिए बेहतर है, isn't it? So let's check it. IT skills, skills and abilities. Write query and fetch for desired records, SQL tools and code for Oracle. इसको आप इस तरीके There is से, fetch. After fetch, there is no requirement of forward, because the write query and fetch desired records. It's desired okay. records by SQL and PLSQL on SQL Developer Tool and Toad for Oracle. These are the two softwares, developer tool and Toad for Oracle. Next, reporting the producers and packages. Producers and packages, this means what? Procedures. It's actually procedures. There are a Yes, lot of this is, queries sorry, inside the procedure. procedures and packages on report builders and BI publisher for Windows OS platform. What is BI? Yes, it's business intelligence publisher. It's a Business software intelligence. basically. BI publisher is a software, and a report builders is also a software. So can we capitalize these two softwares? Yes, we should. Okay. The report builder. Whenever you are writing skills, particular skills of software, they their name should start from capital letter or the whole word should be in capital, or there should be some highlighting. This should be highlighted, isn't it? उस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप स्किल लिख रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंफॉर्मेशन आप उसमें दे रहे हैं सेंटेंस में, तो आपको उसको हाईलाइट करना वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, isn't it? And this is
convention of writing in CV. CV के writing conventions अलग हैं और इस तरह के documents के writing conventions अलग होते हैं, isn't it? BI Publisher for Windows and OS platform. Yes. After platform, the dot is needed or not? Dot means what? A full stop. Full stop is not needed. Isn't it? Okay, okay, sir. When you are writing point-wise, when you are writing anything point-wise, full stop is not needed in all the points. You can put full stop in the last point. Okay. I think we should remove the intermediate and matriculation from the upper section, because the technical skills that are relevant to this is and actually tally.erp9 is not also not required in this type of Don't worry. Don't worry. There would not be any factor of disqualification. I think the certificate course and for Oracle and PLSQL are described individually so that it's look better. Is I it? think this is, I think in my opinion, this is okay. And any candidate who find it, who feel it to not mention, they cannot, they may visit. Well versed with MS Office, Word, Excel, and PowerPoint. Adept in PL, SQL, programming languages, and internet applications, isn't it? So now what this is another. Pardon, please. Next heading should be, all headings should be in similar convention. Font size should be similar. All headings should be similar in font size. They should be similar in color and similar in convention. Attending speaking and communication session, program conducted by education speaking. Actually, the upper topics and the conventions are education and credentials are, and IT skills are not in bold context, are not in a bold format, and communication is in bold. For a student, every student need to be, every applicant need to be clear, like education. If you're talking about education and qualifications, so this is education and qualification. Sorry. This is completed here, isn't it? Okay. This is one section. It is completed. It is next. This is completed here. Now you are moving ahead, and this is another. These are another. So if you are mentioning, you need to be aware about which heading would be used for next point, isn't it? So this is quite okay. You are making short headings and short information. Communication skills. Communication skills. Actually, communication skills certificates you can write. Communication skills are in several webinars on RB, communication mastery, and HCP. Must be not in a bold format. What? The text communication skill. It's in bold. Name of the certificate should be bold. Name of the program should be bold.
I'm talking about the heading communication skill. This is this is bold Yes. now. But the upper topics are not bold. Which topics? IT skill, IT skill is also bold. it's bold. Yes. No, Uh, it's not bold, sir. It is is it not not bold. bold? So we should write in bold. All conventions conventions of all the headings should be similar. If headings are bold, all headings should be bold. Okay, sir. If they are not bold, none should be bold. So I am making them all bold. And is it okay to write academics project? One is in white color and the other is It's in okay. white, It black. is okay. It is okay. And its place is not here. I am replacing it after IT skills. Academic projects. So we have to be very much aware with the importance of writing conventions. We are talking about, I replaced here academic projects for projects. This heading was written ahead, लेकिन हमने इसको पहले कर दिया है. ये आगे लिखा हुआ था लेकिन हमने इसको पहले कर दिया. इसका प्लेस बेहतर यही है. एकेडमिक Yes, क्वालिफिकेशन के बाद आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आईटी स्किल्स को आपने मेंशन किया, उसके बाद एकेडमिक प्रोजेक्ट्स जो आपने किया उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया. अब इसके बाद फिर आपके बाकी स्किल्स उसके बाद में आएंगे. The MES what is MESS management system as final year project? it's actually mess. Mess A management. small. Mess means canteen. Yes. We can call it canteen, a small type of restaurant which will provide the food and to the students Mm. as well as working professionals. So what was this project about? It's actually the MIS for software. mess. MIS for mess or general management for mess? It's actually the whole thing is turned into a digital format or so that everyone can able to understand and formalize and organize manner working. They can work, that is every employee and the customer can get it easily. So see Mess, the MESS. MS it is okay. So you should write it in a better manner, isn't it? Because this line is not making it very much clear what was the project mainly about. So you did digitalization work or MIS. You tried to develop MIS system in the canteen. What was the main project actually? What is why did you write MIS? I didn't understand, sir. Management information system. Okay, If okay. Yes. if there is one organization, even if like if this is canteen, the canteen was doing मैनुअल कैलकुलेशन एटीसीटी से, वो मैनुअल सारा रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन आपने वहां पे मैनुअल सिस्टम नहीं बल्कि आपने उससे कंप्यूटर और उसके सारे Yes. प्रोसेस को
Yes, it's a type of like a monthly subscription, and any if someone want to subscribe it for the whole annually, then he can pay in advance or anything else. Management information system. This means documentation. Yes, yes, Mainly. there is also a project that is that tells us whole the detail of the projects and the management system as well as the codes used in that project. So actually what was the title of the project, so that you can write it here that you did MIS, you did a project on MIS and Yes, digitalization of MES. so we named it as MESS management system. Hmm. MESS, and we introduced it as only MESS. No, MEW you gave it term, but actually in order to make it understand for an interviewer, for anybody who is reading it, so that should be clear, isn't it? Okay. MIS project on Yes, it's quite well now. MIS project On on MESS management system. management system of MES in the college. कॉलेज का था BUA. this MES was in college or what? No, actually, there were not any Private mess. MES. We created it for the whole system or for the individual, and actually we generalize for all the management systems of mess, that if anyone is using or establish any mess system, then they can use our software. Okay. So did you develop software? Yes, we developed. I and my team were there. I think this is better. Build website and search kwamitime.com, such as build websites. Yes. Such as Is there any need to write full form of MIS? Management or I management, stands for what? no, our management information system. Information system. Okay. If is this website correct? Yes, this website is correct, but I don't think that they renew That is the. quite okay. Okay. Need not. Kwame time. But, yes, Spelling? Kwame time. It's Spelling? correct. Is this correct? QAU. Yes, it's correct. Okay. Kwame time. charitycarefoundation.com it is. Yes, Okay. it's actually my freelance project of 2. Okay. And you attended communication skills, leadership.
leadership roles. If you have played any leadership role ever, you should mention it. You can mention it in your CV because this reflects your ability to work, to take on responsibility and to deliver the responsibility. Leadership roles, class representative and joint secretary of the department, who worked as head boy coordinator and sport. Okay, this is fine. Each and every heading should be similar. Conventions, all conventions should be similar. If it is bold, all should be bold. Font size should be similar. Analytical and logical skills, areas of strength. Analytical and logical skills, problem solving ability and easily adaptable to the environment, cooperative and keen observer. Is it okay to write only 3 points? Can write smart and macro, creativity. These are your strengths. CR for position of responsibility. CR. It's actually class representative. This is similar. Leadership roles. Yes, CR 50 members. So I would exclude this heading and I would put this information here in leadership roles. but in the above one line, that in the bullet point of one class representative, it stands for CR. So I think we should remove this, the third point, because in the first point it has been called class representative and joint secretary of BCA department. Yes, this is okay. You need not repeat the same information second time. Position of responsibility. Okay. So now this is okay. Hobbies and interests, drawing and sketching. I think, as I know, you can write if you have hobbies to help others. This can also be hobby of some people, but this is leadership quality, isn't it? To like to help others is a leadership quality. Okay, sir. Helping others, solving intricate problems, solving problems. Isn't it? Yes, sir. These are personality related and interpersonal effectiveness and leadership skills. Drawing, sketching, playing chess. We need to be quite aware with our own personality, and we need to be aware with our traits of personality that are more relevant to our professional life and more relevant to our specific jobs that we are applying for. So it would be better that we discover or we identify our habits or from our habits. अपनी हॉबीज में से, इंटरेस्ट में से उन इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर लेना बेहतर है जिन इंटरेस्ट का इस्तेमाल आपके ऑर्गेनाइजेशन में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में
होगा। अगर वैसा आप करते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद है। हर कैंडिडेट को अपने आप को इस निगाह से भी देखना चाहिए। जब आप अपने अंदर अपनी उन क्वालिटीज को डिस्कवर कर पा रहे हैं जिन क्वालिटीज का वैल्यू है, प्रोफेशनल वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो आप ही की क्वालिटीज हैं एंड यू वुड बी एबल टू एंजॉय देम इन योर प्रोफेशनल लाइफ, isn't it? So we have come to the completion of your CV. CV के completion तक लगभग आप पहुंच चुके हैं. So your CV is extending to 3rd page. You can adjust in 2 pages also. 3rd page में जा सकता है या कुछ और चीजों का आप कॉन्सेप्ट कर सकते हैं. The clone mark is necessary for every Colon. This is not clone. This is colon. colon. Okay. Isn't it? The reference declaration. Reference is not necessary without mentioning. मेंशन किए बगैर रेफरेंस की जरूरत नहीं है. अगर रेफरेंस अभी मांगा नहीं गया तो डोंट मेंशन इट ऑन योर सीवी. मांगा गया है तो फिर आप मेंशन कर सकते हैं. डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर. So now your CV has been completed in within 2 pages. 2 पेज में आपकी CV कंप्लीट हो चुकी है. And this is looking better than before. पहले के मुकाबले में अब ये बेहतर लग रही है देखने में भी. What do you think? True. Absolutely true. So I think we should take care about all aspects of our CV. So in this declaration, it's okay to write in the front of declaration that I hereby declare. It is okay. I hereby declare that all the above furnished details are true to the best of my knowledge. This is okay. Actually, I reduced it because of the need of adjusting it to 2 pages only. 2 पेज में adjust करने के लिए फिर उसको कर दिया गया. Otherwise, if you have enough space, do we remove the section that is signature? No, only to mention the signature. इस heading को हटाने की जरूरत नहीं है. Actually, it is better to do a signature by the side of this. वैसा किया जा सकता है, साइड में किया जा सकता है. इस Please left click. Yeah. The left click on the sorry, right click on the image, please. Go to the text wrapping. Text wrapping. Below. Yes. In front of text, please select. Do select in front of text. Below. In front of text. Yes. Now you can shift. It's not going. Actually, the margin is there, so we can change the margin. For this. Which margin? Actually, where we are placing the image, it's due to not replace because of margin. We can change margin. So how do you do it? Go to the page layout.
So actually, I am leaving it. I can. This Yes, can be adjusted by you. Yes. This can You be can. adjusted by you, isn't it? Yes, inshallah. So mainly we have already completed the necessary changes in this CV, and now I am stopping to share this my screen. Every applicant, every student who is, or every job aspirant who is making CV, जो भी CV बना रहे हैं अपना, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि CV should be as per the requirement of your job. जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी CV लिखी हुई होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जॉब प्रोफाइल जिन स्किल्स को मांग रहा है वो स्किल्स होने चाहिए। जिस तरह की पर्सनैलिटी उस जॉब प्रोफाइल में जरूरी है वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स आप में होने चाहिए। जिस तरह की इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के लिए जिस स्किल्स, जिन एक्सपोजर्स, जिन इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स की जरूरत है वो आपकी सीवी में होना चाहिए, isn't it? Actually, you just need to be very much practical. अपना प्रैक्टिकल अप्रोच डेवलप करने की ये जरूरत है कि एम्प्लॉयमेंट में जिसमें आप जा रहे हैं, एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर एन इफेक्टिव एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की जरूरत है, एम्प्लॉयर को स्टूडेंट की या किसी भी बंदे की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉय, डिपेंडेबल एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय। सो यू नीड टू सी योरसेल्फ विद योर एम्प्लॉयर्स आईज। आप अपनी कंपनी, अपने एम्प्लॉयर की निगाह से आप अपने आप को देखें तो आपके लिए आसान हो जाएगा अपनी सीवी को भी अच्छा बनाना और अपनी प्रिपरेशन को भी अच्छी तरह से कंप्लीट करना। जो आपके अंदर टैलेंट गैप है उस टैलेंट गैप को ब्रिज करिए, टैलेंट गैप को ब्रिज करके अपने आप को डेवलप करिए सो दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए आसान हो जाए। सीवी जब बना रहे हैं तो कम से कम इन दोनों पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना है। एक तो ये है कि दैट शुड बी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब एंड एम्प्लॉयर, और दूसरा क्या है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या, बीच में हमने आपको एक हिंट दिया था, सीवी इज अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन सीवी। तो ये सीवी, इसका फॉन्ट, इसकी लैंग्वेज, इसके कन्वेंशंस, इसमें सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, दीज ऑल शुड बी करेक्ट फॉर्मेट में होने चाहिए। हमने इससे पहले जो आपका सीवी, रेज्यूमे और बायोडाटा का एक सेशन लिया, इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने शेयर किया था आपके साथ कि सीवी, रेज्यूमे और बायोडाटा में चेंजेस है वो एक जैसी चीजें नहीं है। जब एम्प्लॉयर आपसे रेज्यूमे मांग रहा है तो फिर आप एक पेज का रेज्यूमे बना करके देंगे। उसमें किस बात का ध्यान रखना है, उसमें इन बातों का ध्यान रखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलिवेंट स्किल्स है, क्वालिफिकेशन है, इंटर्नशिप है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, जिसका रोल आपके इंटरव्यू में और आपके जॉब के सिलेक्शन में होगा, उन्हीं चीजों को मेंशन करना है। और जिन चीजों को आप छोड़ सकते हैं, यानी जो चीजें लेस इंपॉर्टेंट है उनको आप रहने देंगे, isn't it? तो एक पेज में जब आप अपनी सीवी को छोटा करके रिड्यूस कर देते हैं तो आपकी सीवी का जो रिड्यूस्ड फॉर्म है दैट इज कॉल्ड रेज्यूमे, वो रेज्यूमे है। तो रेज्यूमे इज ऑलवेज कंसाइज, सीवी शुड बी योर डिटेल्ड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन फॉर जॉब। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कोई और सवाल अगर है तो आप सवाल पूछ लें, otherwise we would complete the session. No, it's all clear to me, and it's okay, sir. Okay, Sharik, I hope I have made You it have clear, covered all. quite clear for you and for other students who are trying to make their CVs better. Thank you very much. Best wishes for everybody. Take care. Thanks a lot, sir. Most welcome.